अच्छा, तो आज हम जो है ना मतलब एक पोइम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है ना हम फिर पढ़ाएंगे आपको एक्टिव पैसिव के एक पार्ट और भी रहता है। अब आप बताइए कौन सा एक पार्ट रहता है एक्टिव पैसिव। एक तो हमने पढ़ लिया, बाकी क्या रहता है। हमने एक ये पोइम है, देखो द सोलिटरी रीपर। कभी ये पोइम पढ़ा है आपने? ये पोइम आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा होगा ना, 8वीं में या। द सोलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज कंपोज दिस पोइम। Haven't you read this poem or recited this poem? Reaper is actually a girl, it's a story of a girl. And she was really a solitary. Solitary means she was lonely. She was only one and she was single in the field. And I would like to share the story of this girl. Really loyal, committed, brave and daring girl. Brave and daring girl. See her characteristics. So what happened once, William Wordsworth, he is a poet of nature, or he was a poet of nature. His his hobby was what? To visit such fields, to visit such mountains, or such where he had to enjoy the nature. So once he was going through the nature, and suddenly he came close to a girl who was singing a song, a very sad song, quite tragic song she was singing. He was much impressed, or he was much grieved to stay or to stop for a minutes there in order to learn or to understand that what the girl was actually singing there. He stood for a very long time, but he never heard, or sorry, never understood, never got the true diction, true meaning of the lines of the song was sung by this brave. Then you will ask me a question, sir, how do you say that this was a brave and a daring girl when Wordsworth failed to understand the meaning of the song? Okay, so what was actually the sing by this girl? See, this girl had reasons. Her parents were killed in in some disaster, natural disaster. So she lost her siblings, family members, relatives. She lost everybody. And she only was the one to survive behind all of the family members. So it was really difficult for this girl to live, to survive. I say really salute to this girl. How brave and how courageous and how bold and heroic this girl was, in the sense we have seen many of such, young girls or the children, when they lose something, they cry, they complain, or they come on roads to beg, charity from the people. You've noticed many of such, people of the age. मना आपने देखा होगा, जब ऐसे लोग आर्फन हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, या गरीब हो जाते हैं, तो हमने देखा है कि वो उनको भीख मांगते हुए हमने देखा है। लेकिन इस लड़की की मतलब यानी जुर्रत को, इस लड़की की हिम्मत को सलाम है कि इन्होंने जब अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग्स, सब उनके देखो मतलब यानी एक डिजास्टर में, एक मुसीबत या आफत के अंदर उन्होंने सब उनके खत्म हो गए, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन then there was nothing to survive. Nobody was there to help her out, to provide her solace, okay, to provide her consolation, or to give her some sympathy, okay. While she thought what? She preferred only one thing, and that was what? She went in her field. Solitary reaper, a young and the single girl, she went in the field. In the field,
the field of wheat, the field of crop. She went there and she started harvesting. She started harvesting or cutting the field because it was the time or it was the season of cutting the crops. So she started doing that labor there over in the valley, in the mountain. She did, I mean, lot of labor over there. Suddenly Wordsworth visited her and found the girl being busy, loyally or devotionally, and not only she was working, okay, but she was singing a song there. Wordsworth was, surprised or astonished to see that how it is possible for a single girl. He looked here and there that there may be some other, her fellows, her companions or colleagues. She may be, along with them, but nobody was there. So he was surprised, stood for a very long time, and later on heard, later on he realized or he got or understood that she has lost everything. She has lost everything, but she preferred not to be sad, not to be disappointed, or not to be scared, or not to be dependent upon other people. She she never went ahead to ask somebody else that now she has lost everything. So she should be helped, she should be given some money, or she should be given some home, or she should be given some education, or she should be given something else. But never at all. She never compromised. She never extended her hands for the sake of the charity, but she preferred to work with her own hands because she thought that this is the only way to divide her sorrows, okay, to minimize her sorrows, or to be decent human beings in the eyes of the people. Otherwise, the people will make fun of her character, fun of her status, her honor, her respect, her life, and people will consider her inferior, that she is the only one and now she has lost everything. So she will always be dependent. So never at all. So she happens to be a very miraculous, super character, in the eyes of Wordsworth. And he stood there for a very long time. And later on, he went ahead and looked back and saw her. She was seen busy in her work till she completed her work, and then she returned to her home. But never ever she got tired or she complained, she cried, not at all. While she lost everybody, all the family members, relatives. It was, earthquake-like disaster that brought, entire tragedy upon our family members. So nothing was there. Now we learn from the story of this minor character, minor girl, of about 13 to 15 years old. See how much she was bold and daring one. When we face some slight competition in our college, we feel something, disappointing that now we'll lose our career, lose our aim, our purpose, our goal in our life. But see how much this girl was. Uh, सही है इंग्लिश में गला है उर्दू में and if you feel something wrong then I should tell you in Urdu or Sindhi. Okay. So see that we learn the lesson or the message from the story of this girl, that she was illiterate girl. She belonged to a rural side, countryside. She was not highly educated. She lost her parents. Nobody was there to encourage, to motivate, to coach, to train, or to guide her for the sake of something. Despite, such tragic circumstances or the problems, she realized that she is the only one. Nobody else could come to do anything, and it was she to continue her life, not somebody else would come to help her out. So she continuously, did well and happened to be a very strong character in the eyes of the people. This is really a big lesson for all of the people. Those people who have troubles, those who have hardships, those who have failures, or those who have some disappointing days in the life. No, see that failure is something small, I say. Failure or getting low score of marks, I say it's not really a big failure. But when we lose our parents, just imagine how much it is greater loss. It is irreparable loss, can't be repaired. It's a big vacuum or the space. Nobody can fill in the place of the parents, She lost such precious parents from her life. So how much it was difficult for her to manage that gap.
while she realized that if she went here and there, then people would not give her the same parents. It's better that labor and hard work. She preferred labor or hard work was the only quality that can manage or that can engage her in the work to get rid of the stroke of sorrow, the stroke of sadness or disappointment. Otherwise, if she stay lazily and just sit with the people, then people will come to multiply her sorrows. उसने सोचा कि अगर मैं सिर्फ लोगों के साथ बैठूंगी तो जो आएगा वो आकर कौन सी बातें करेगा। यही बात है कि देखो आपसे ये हो गया, अब आप कहाँ जाओगी, इतनी बड़ी आपसे जो वो मुसीबत हुई है, इतनी तबाही हुई है आपकी, अब आप अकेली। माना लोग ऐसी बातें कर करके इसको मार देंगे, ये खत्म हो जाता। तो इन्होंने मतलब यही डिसाइड किया कि मुझे जो वो मेहनत करनी है, मुझे काम से काम रखना है, मुझे लोगों के पास जाना भी नहीं है, ना लोगों को आने भी देना है कि वो आकर मेरी दुख में शरीक हो, क्योंकि इससे ये होगा कि वो हर वक्त जो बात करेंगे उससे मैं और ज्यादा हर्ट होंगी। जो इंसान खुद जितना दुखी होता है ना, किसी और को इतना दुख नहीं होता। भले कोई भी आए, वो फॉर्मेलिटी के तौर पर आता है, वो रस्मन आता है हमारे पास, उसको थोड़ी इतना मतलब दुख होता है या उतनी परेशानी होती है, या जितनी ट्रेजेडी से हम सफर कर रहे होते हैं। तो वो आकर सिर्फ बातें करता है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जिस इंसान को तकलीफ होती है वो ही ज्यादा सफर करता है। तो इन्होंने देखो इतनी बड़ी सफरिंग के बाद, इतनी बड़ी तकलीफ के बाद, वर्ड्सवर्थ एक ये मतलब नेचर के पोइट है, इन्होंने काफी अच्छी अच्छी शायरी, हमने ल्यूसी ग्रे वाला पोइम भी पढ़ा था, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में, पता नहीं पढ़ा था नहीं, या आपकी क्लास में नहीं थे तब। हाँ, तो देखो उन्होंने मतलब ये जो जो सिलेक्शन की है, या उन्होंने जो इस कैरेक्टर को जाकर मैंने नोटिस या विजिट किया है, उसमें से ये अंदाजा लगता है कि कितना माइटी कैरेक्टर है, कितना जबरदस्त। हालांकि गर्ल्स के अंदर गर्ल्स ये सोचती हैं कि वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, या सेंसेशनल या इमोशनल, या उनसे ये काम नहीं होंगे, वो इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये एक बहुत बड़ा देखो इंस्पिरेशन है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि देखो एक ऐसा लॉस हुआ है, एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जिस ट्रेजेडी के बावजूद भी उन्होंने कहा जिंदगी सब कुछ है, जीना तो है उन्होंने कहा, लेकिन फिर मतलब इस तरीके से जीना, इतने बड़े हौसले से जीना कि बाकी लोगों को ये दिखाना कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन इस दुनिया में बाकी नहीं रहे हैं तो चलो खैर है, लेकिन मैं उनके बाकी मिशन को कंटिन्यू रखूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर माना आपको सहारा बनाकर भले दूसरों को वो सहारा बनाए, लेकिन वो वालिदैन तो नहीं बन सकते ना। तो इन्होंने इसीलिए अपने आप जो है वो जिंदगी गुजारना शुरू की, और वो भी इतनी मेहनत से। और वो क्या कर रही है देखो, पोइट लिखता है, हमारे पास अभी बुक नहीं है, शायर लिखता है कि काम मतलब वो रीपिंग मना उसको मना क्रॉप को काटती रहती है, रीपिंग करती जाती है और सिंगिंग करती जाती है। ठीक है ना, मना लेबर करती जा रही है और सिंगिंग साथ साथ सिंगिंग। मना ऐसे सर मुझे बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जब वो एंट्री टेस्ट की टेस्ट दें और टेस्ट एमसीक्यू करते जाएं और गाना गाते जाएं, सिंगिंग म्यूजिक, या कोई भी टेस्ट आए मुझे बताओ, हमें से कोई करेगा? कोई याद आएगी लाइन एक भी? किसी को नहीं आएगी। मना ऐसे हालात में आपने अपने वालिदैन को खो दिया, देखो वो बहुत बड़ी मना बात है। तो इसका एक कमिटमेंट देखो, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ वो सोच रखेगी जहन में, किसकी? मना पेरेंट्स की या दुख की, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर ये नाकाम होकर परेशान होकर तो फिर काम भी नहीं होगा, इस पूरी हिम्मत पूरी एनर्जी इसकी जाया हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए मना सिंगिंग भी कर रही, ठीक है, सिंगिंग कर रही थी, और रीपिंग, सिंगिंग एंड रीपिंग, ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए इधर मतलब इसकी शायरी के अंदर, कि शी वाज सिंगिंग एंड रीपिंग बहुत मना, यानी ये जब लेबर भी कर रही थी और सिंगिंग भी कर रही थी, ताकि मना वो जो शौक है वो बार बार इसके जहन में ना आए, जिससे वो और ज्यादा मतलब पैरालाइज हो जाती है और क्या। तो
बस आखिरी सवाल मैं पूछ के आपसे प्लीज जाता हूँ। क्या इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू मैनेज अवर लाइफ व्हेन वी फेस सच लॉस, सच ट्रेजेडी? क्या हम ऐसा अपनी जिंदगी को मैनेज कर सकते हैं? क्यों, भला क्या है ऐसा? मैंने ऐसा क्या है, ये तो इन्होंने तो कर लिया। अच्छा, नहीं तो मतलब इधर भी देखो नहीं कितनी ब्रेवरी। नहीं तो अचीवमेंट, देखो इसके सिवा तो अचीवमेंट पॉसिबल नहीं। मैंने अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, अपने आप को मजबूत नहीं, वो तो वापस आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो वापसी नहीं है रे, देखो। तो वो तो देखो है, लेकिन लेकिन ये रियलिटीज भी है ना, कुछ तो जिंदगी में देखो हकीकत भी है, फैक्ट है। जो हमें हमें माना ये चीज एक फैक्ट है भाई, सबको भी इस दुनिया से जाना है, एक फैक्ट है। लेकिन उन्हें शायद इस फैक्ट को जहन में रखकर अपनी जिंदगी गुजारी। उन्होंने कहा भाई चलो आज ये चले गए, कल मुझे भी जाना है इस दुनिया से, तो इसीलिए इन्होंने अपने काम को, अपने मिशन को जो वो कंटिन्यू रखा है। लेकिन देखो अगर ये ऐसा ना करती, चलो ये काम हमें लग रहा है कि ये इन्होंने कैसे मैनेज किया भाई ऐसे हालात में, तो क्या ये लोगों के पास जाती, जो बाकी लोग हैं उनसे भीख मांगती, उनको कहती कि आप मेरे मना सहारा बनना, या आप मेरे लिए करो ये, या रोना वगैरह इधर उधर, तो आपको क्या लगता है कि वो ठीक है या ये ठीक है? ये तो बेहतर है ना, कम से कम उससे तो बेहतर है। आपको पता है लोग मतलब थोड़ी इतने जेनुअन बनकर, माना पेरेंट्स की तरह जो वो ये नहीं इसके दुख में या उसके दुख को कम करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो इसको प्रीफर किया। लेकिन इन्होंने जो ये काम किया है ना, ये वाकई आप वाली बात की ये बहुत मुश्किल है। माना एक ऐसे हालात में जब इंसान एक बड़े सदमे से गुजर रहा हो, और तब यानी सिंगिंग एंड रीपिंग, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन वर्ड्सवर्थ हमें एक मैसेज देता है कि अगर आपको भी किसी ऐसी ट्रॉमा से निकलना है, तो अपनी जिंदगी को म्यूजिक बनाना पड़ेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है कि हम किसी बड़े टारगेट या डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल और इस पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।